Hello students. Today's topic I have taken from BCom second semester English course, and the topic is the art of the essayist. I will be talking about the main ideas of the essay. But before we go into the text, let's discuss what an essay is and what are its categories. So an essay is a piece of writing that discusses about a topic systematically and in detail. And its categories are that it can be formal or informal. A formal essay is when the writer is in background and the subject is discussed seriously and objectively. While in an informal essay, the writer is in conversation with its reader and the tone is relaxed and entertaining. So our present topic falls in the second category, that is informal essay or personal essay. So let's come to A.C. Benson's The Art of the Essayist. You see, in the very title, Benson uses the before essayist, the art of the essayist. It means that he is going to talk about the essayist of some particular type of essays, that is personal essay. So when he starts talking about nature of the essay, the very first thing that he states about the essay is it's a personal type of essay, and defining this essay, he says this is an essay which someone does himself. It means the personal content dominates the essay. And then the charm of the personality is visible in the essay. And the essay is a thing that the writer has formed from his own impressions. The charm of the essay depends upon the charm of the mind. Means the way the mind has captured the reality, the reflected reality will be depending upon the charm of the mind. And then it's a thought expressed with a certain gusto, means enjoyment. It's very important for the essayist of a personal essay that he must think, assimilate and enjoy the idea himself first, and only then he or she will be able to convey that specific enjoyment to the readers. And then he says that the essayist art is to say what has pleased him without too prudently considering whether it is worthy of the attention of well-informed mind. Means he does not bother about logic. Now, the second thing that is important is the subject matter of the essay. So, Benson says that the point of the essay is not the subject. The point of the essay is not the subject because any subject will suffice. The essence is personal sensation, personal impression. So, subject can be anything that leaves an impact of the mind of the author, mind of the writer, and it creates a sensation in him. That can be the topic, that can be the subject matter of a personal essayist writing. So, to substantiate his point, Benson refers to a number of essayists. The first reference comes of Montaigne. Montaigne was the French essayist, and he is considered to be the first writer who wrote what may technically be called essays. His essays are partly autobiographical, partly speculative. Then he talks about Cicero, who was a Roman, Plato, who was Greek, and then comes some English writers, Thomas Browne, Edison, Charles Lamb, De Quincey, and Walter Pater. Charles Lamb you have read in your syllabus.
Charles Lamb's The Complaint of a Bachelor of the Behavior of the Married People. And De Quincey, the first essay of De Quincey that comes to mind when we name De Quincey is The Confession of an English Opium Eater. So you see कि कितने unfamiliar, if anything that catches the mind of essayist can be the subject of his essay. So, giving so many references, Benson gives special reference to Charles Lamb. As you have read in your syllabus that Charles Lamb, and we discussed in our class too, that Charles Lamb has written on something very unusual. एक कुंवारे की कंप्लेंट मैरिड लोगों के बिहेवियर के बारे में कि कैसे मैरिड लोग उसे ऐसा फील कराते हैं कि he lacks something. So this way Benson says that Lamb created romantically the homeliest stuff of life. The homeliest, this is the homeliest stuff. कि किसी मैरिड के घर जाके किसी बैचलर को कैसा फील होता है. And he showed how the simplest and commonest experiences were rich in emotion and humor. अब जो कंप्लेंट है वो सिर्फ कंप्लेंट नहीं है, वो सिर्फ वो बिटरनेस नहीं शो की गई, लेकिन एक हल्की फुल्की सी शिकायत है बहुत ही ह्यूमरस अंदाज में. सो चार्ल्स लैम्ब के पास बेंसन कहता है वो आर्ट था जिसमें वो ट्रांसफिगर कर दिया करता था सिंपलेस्ट एक्सपीरियंसेस को एक फेरी टेल की जैसे. नेक्स्ट, इन यूनिट सी बेंसन टॉक्स अबाउट नॉमेनक्लेचर ऑफ लिटरेचर. नॉमेनक्लेचर मीन name. How do we name the different categories of literature? Like this is prose, this is poetry, and this is drama, and so on. So Benson found that these categories, this nomenclature of literature is confusing. The writings should not be classified into watertight compartments क्योंकि उनमें overlapping features होते हैं. तो ये जो नाम दिए गए हैं ये कंफ्यूजिंग है जब तक के लिए इनको सिर्फ कन्वीनियंस के लिए यूज नहीं किया जाता. खास बात वो करता है प्रोज एंड पोइट्री के बारे में. जनरली वी टेक पोइट्री एज द ऑपोजिट ऑफ प्रोज, बट बेंसन सेज दैट पोइट्री इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ प्रोज, रादर साइंस इज द ऑपोजिट ऑफ प्रोज, बिकॉज पोइट्री इज समथिंग written in a rhythm, and that rhythm can be found in prose also, particularly when he is talking about an essay that is written with certain gusto, enjoyment. So science जो particularly specifically emotions को परे रख के लिखी जाती है, enjoyment को परे रख के सिर्फ fact की बात करती है, वो ही poetry का opposite हो सकती है. तो प्रोज और पोइट्री सिमिलर हो सकते हैं. तो प्रोज का जो ऑपोजिट है वो वर्स है. वर्स का मतलब वो राइटिंग जिसको छंद में, इंग्लिश में इसे मीटर कहते हैं और हिंदी में इसे छंद कहते हैं. तो वो राइटिंग जिसे छंद में बांध के, यानी टेक्निकली मीटर में बांध के लिखा गया हो, वो वर्स है और वही प्रोज का ऑपोजिट है. तो अगली बात वो करता है क्वालिटीज ऑफ द एसेइस्ट, यानी जो पर्सनल एसे लिख रहा है उस राइटर में क्या क्या गुण होनी चाहिए. द फर्स्ट थिंग इज दैट ही इज अ स्पेक्टेटर ऑफ लाइफ. As said before, that he takes his material from the homeliest thing, from the commonest thing. So he must be a good spectator of life. उसकी observation बहुत अच्छी होनी चाहिए और अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करने का उसमें एक इनबॉर्न टेस्ट होना चाहिए. और फिर जब वो अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करता है, ही शुड बी कंसर्न्ड विद द पेजेंट ऑफ लाइफ. पेजेंट ऑफ लाइफ मीन व्हाट लाइफ शोज, जो सामने दिख रहा है, नॉट इट्स एम्स एंड पर्पसेस. वो फिलोसोफर नहीं है कि वो लाइफ के एम और पर्पस के बारे में विचार करे. वो जैसा दिख रहा है सिर्फ उसी को देखे, उसी को सोचे और उसी को अपने रीडर्स को कन्वे करे.
Next is things. He must be concerned with the things as they appear, not their significance and ethical examples. इसका मतलब क्या कि the essayist is not to judge the things. He should not be judgmental. चीजें जैसी दिखाई दे रही हैं उन्हें सिर्फ वैसा ही देखना है और वैसा ही अपने रीडर्स को कन्वे करना है. Next quality of the essayist, that he should be dealing with inconsistencies of humanity, not its dignity. Humanity की dignity से डील करना फिलोसोफर का काम है, लेकिन जो essayist है वो दिखाता है कि जो ह्यूमैनिटी है, जो आम लोग हैं, वो कैसे जो सेट स्टैंडर्ड है उससे हट के काम करते हैं, हट के चलते हैं और इस ऐसी ही चीजों को लेके वो अपनी राइटिंग को एंजॉयबल बना सकता है. इसके रिलेटेड मुझे याद आता है डी क्विंसी, जिसका रेफरेंस अभी पहले दिया था. डी क्विंसी वॉज एन इंग्लिश राइटर हु रोट एन एसे. द टाइटल वॉज Confessions of an English opium eater. ओपियम ईटर यानी अफीम खाने वाला, यानी एक अफीम खाने वाला अपने बारे में क्या कहता है उस पे उसने ऐसे लिखा. सोचो कितना इंटरेस्टिंग होगा. तो नेक्स्ट क्वालिटी है व्हाट पीपल एक्चुअली डू, नॉट व्हाट दे ऑट टू थिंक अबाउट. फिर वही बात कि लोग क्या करते हैं एक्चुअली, वो नहीं जो उनको करने के बारे में सोचना चाहिए. अगेन फिर बात वहीं पे आती है कि एसेइस्ट मॉरलिस्ट नहीं है. फिर अगली क्वालिटी जो वो एसेइस्ट की कहता है कि एसेइस्ट अ लेसर काइंड ऑफ पोइट है. पोइट जैसा ही है, एग्जैक्टली पोइट नहीं है, लेकिन एक छोटा मोटा पोइट एक अच्छा पर्सनल एसेइस्ट होता है. वो रोमांसर का ऑपोजिट है. रोमांस का यहाँ मतलब है इमेजिनेशन, यानी वो जो देखता है वही लिखता है. वो इमेजिनेशन में, टोटली इमेजिनेशन में नहीं जाता, और अगर जाता भी है तो रियलिटी में वापस आ जाता है. इट मीन्स दैट he is the one who holds the balance between imagination and reality. And doing this mean while holding a balance between imagination and reality, he becomes an interpreter or critic of life. So ये सारे काम करते हुए what the essays does for the readers, वो significant कैसे है, क्यों हमें एक पर्सनल एसेइस्ट के एसेज को लिखित को पढ़ना चाहिए. Because he prepares the readers for life's infinite variety. वो लोग जो एक्चुअली करते हैं, सेट स्टैंडर्ड से अलग हटके करते हैं, उनको दिखाता है. इसलिए उसकी राइटिंग में जिंदगी की इनफिनाइट वैरायटी दिखती है, और वो जिंदगी के जॉयफुल और मॉर्नफुल, यानी खुशी देने वाले और दुख देने वाले सरप्राइजेस के बारे में एक ही जैसे लिखता है. फिर दैट द वर्थ ऑफ एक्सपीरियंस इज नॉट मेजर्ड बाय सक्सेस बट इन फुलनेस ऑफ लाइफ. अच्छा एसेइस्ट हमें बताता है कि जो वर्थ ऑफ एक्सपीरियंस है लाइफ में, एक्सपीरियंस मैटर करता है, सक्सेस नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस में ही लाइफ की मीनिंग छुपा है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एसेइस्ट हमें बताता है वो ये है कि जिंदगी की जो खूबसूरती है वो क्या है, देने में है, बल्कि रिसीव करने में नहीं है. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस एसे. हैप्पी रीडिंग, हैव अ नाइस डे. So my dear students, don't think that essays are always tough and tiring. Take your book, read the text, and I'm sure you will ask for more. So happy reading, and don't forget to share, like and subscribe.